that we must not abandon the Senate battleground has been vindicated. صرف اور صرف بائی الیکشنز میں حصہ لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ایکسپوز کر لیا، دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کی عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرے جماعتوں کے کہنے پہ چلتے اور یہی بائی الیکشن سینٹ سے پہلے بوائیکاٹ کرتے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سارے سیٹس مفت میں لیتے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اپوزیشن کی سیاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوتا۔ آپ کا سٹانس صحیح ثابت ہوا جب ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لے کے حکومت کا نہ صرف مقابلہ کیا، حکومت کو فری رائڈ نہیں دی، پی ٹی آئی حکومت کو اوپن فیلڈ نہیں دیا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لے سینٹ آف پاکستان میں۔ الٹا ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وفد کو شکست دلوا کے ایک تاریخی کامیابی اپوزیشن جماعتوں کو کے لیے حاصل کیا تھا کہ حکومت کے پچ پہ وزیر اعظم کے کانسٹیٹیوئنسی سے نیشنل اسمبلی فلور سے ہروایا گیا۔ Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed, the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party
for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ, ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाज़त दी गई. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है. किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से रब्ता किया, ना लॉयर से रब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से रब्ता किया. इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया. जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा. जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM के सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है. उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं. किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई. गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का. तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं. एंड द पीपल्स पार्टी विल कंटिन्यू इन इट्स ऑपोजिशन. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF का पैकेज, जिसके खिलाफ हम रमज़ान में भी आवाज़ उठाएंगे. मगर हम मुतालबा करते हैं
کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی، اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے، اور ہم سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہیں، ہر ایک سیاسی جماعت کا رسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں۔ ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر ایک اس سیاسی جماعت کے لیے اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے، اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں۔ ہم نے نہ پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا، نہ آگے جا کے ہم ان کو آرام سے بیٹھنا دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے، اور ہمیں ہر صورت میں جو حکومت کی مخالفت ہے، جو حکومت کی نالاحقی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے، ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری جو ہے ایگجیکٹو ہونا پڑے گا، وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا، جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا، اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو، لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن ہم اپنے جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم لگے رہیں گے کہ اس PTI سرکار کے خلاف، اور خاص طور پہ جو ان کا PTIMF کے معاشی پالیسیز ہے، ان کے مخالفت کرتے ہوئے، ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ Other items with permission on the chair کے نیچے کافی ایشوز اٹھائے گئے تھے، میں بہت کوئکلی اور بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بھی سنانا چاہوں گا۔ So the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. اور ہم اس لاء کا مقابلہ کریں گے، اس کا ہم اپوزیشن کریں گے، اور ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لاء کو پاس ہونا چاہیے۔ The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association, and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments.
3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा और मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस पे इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है. और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है to conduct a comprehensive vaccination drive across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरा ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूं, दो चालियों आप बात कर लें पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू. दो करीब आता है इस पार्टी हमारी में छोड़ के गई थी, साथ छोड़ दिया था और अकेला गवर्नमेंट बनाई थी. इस मतलब अगर इतनी जबरदस्त मूवमेंट हुई पीडीएम की, आम मोर्चे पे पाकिस्तान पार्टी को गलत हो रही है, आप क्या समझेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में, आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद असूलों के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक लड़ती आ रही है, लड़ रही है और आगे जाके भी लड़ेगी. हमने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़ाती मुखालफत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा. हमने अपने असूलों के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद लड़ती रही, और इसी जमहूरी जद्दोजहद की लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को अयूबी आमरीत से और याह्या खान की आमरीत से निजात मिला, ज़िया अल हक की आमरीत से निजात मिला, मुशर्रफ का आमरीत से निजात मिला, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सिलेक्टेड आमरीत से भी निजात मिलेगी. आप संजय आपके पीछे जो आप जी. अच्छा, वकील दाढ़ी उगा ली तुमने. दाढ़ी के लिए आपका मास्क है, मुंह के लिए नहीं. आज की आपकी माशाल्लाह इतनी खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, और दूसरा इसके साथ साथ शहीद बीबी ने जिस शख्स के लिए खत में अपने जान को खतरात के हवाले से लिखा था, परवेज इलाही का नाम ऊपर ने लिखा था, आप उसको तो वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब का तैयार हैं, और जो मुल्ज़िमान का वकील था आज़म तारड़, उसको वो आपको कबूल नहीं था, वजह क्या? आपका सवाल आप एक चुने.
कौन सा पूछना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, सो जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़त थे वो तो लिखे गए थे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़तरा था। जहाँ जहाँ से हमें शक था, जहाँ जहाँ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त शक था, वो ऑन द रिकॉर्ड है और सामने लेकर आए थे और अवाम के सामने और मुल्क के सामने वो डाले थे और वो खतरा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके पीडीएम ने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया, अवाम ने दिखा दिया कि वो अपोजिशन के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं।